After saying goodbye to Langkawi, I took a scenic ferry ride followed by a bus journey with sunset to reach my next destination in Malaysia, Penang. You can also call it a multicultural island of Malaysia. Wondering why? Let me tell you that shortly. तब तक बाकी की वीडियो एंजॉय करो. वेलकम टू अनदर व्लॉग. सो राइट नाउ आई एम इन पेनांग, जो कि एक और सिटी है मलेशिया में. बट हम पेनांग के आइलैंड टाउन में है, जो कि जॉर्ज टाउन है. एंड एज यू सी बिहाइंड मी देयर इज सच अ ब्यूटीफुल व्यू. माउंटेन्स है पीछे. करंटली वी आर इन अ टेम्पल, जिसकी वजह से मैं धीरे बोल रही हूँ. टेम्पल का नाम है केक लॉक सी टेम्पल. एंड यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी हम फर्स्ट फेज में ही है टेम्पल के. इससे और 2 फेज अप है, सो द व्यू विल जस्ट गेट बेटर. लेट्स गो. So we are off to the third phase, which is the final phase. And how we know about the phases is because सबसे नीचे से हमें एक lift मिलती है जाने के लिए, so that you don't have to walk at all. And now that we are on to the third phase, वहाँ पे जाने के लिए we have to still pay 3 RM. And नीचे से if we would have taken, it would be 8 to go up, 8 to come down, so in total 16 RM. So now we are headed towards the third phase, क्योंकि वहाँ पे वॉक करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है. We are finally at phase 3 and behind me you see this huge bronze statue, जो कि यहाँ पे जाना जाता है One Yin statue के नाम से. And this is 30 meter high and this depicts the goddess of mercy. Fun fact, इसको बनाने के लिए they spent 40 million RM, जो कि INR में convert करके somewhere around 720 million होते हैं. And that is 72 crores. That is a huge amount to spend on a statue, to be honest. And look at the view. Sundar, and I told you it will get better. So we are stuck in rain and it is raining heavily. So I thought of telling you what is happening here. So यहाँ पे these people like these diyas, which they buy from here only, and they last for 30 days. Like the bigger one lasts for 30 days, and the smaller one lasts for 14 days, I guess, and like it goes down till 1 day. And they like these big agarbattis as well. And they also have this thing. They write their dishes on this and they put it here. And they also have something on wood. They like write their names and keep it here for some praying purpose. So that is like the Chinese praying culture in Buddhism. So we've been at Gurney Drive and we've been walking around for 45 minutes and experiencing the place. So there are 2 small markets जहाँ पे hawker stalls हैं. Like there are shops with different cuisines because Malaysia or Penang is known to be a multicultural place. So different cuisines are there. Apart from that, we came across a market which was like, what? It was a seafood market, and वहाँ पे they had aquariums with the animal, like the marine life living within it. So it was very congested for them, but it had a tagline saying, "If it swims, we have it."
So that was like a very different thing I have seen in my entire life. So that was that. And apart from that, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी buildings हैं, इनके सामने ही like you see Marine Drive, like that बड़ी बड़ी buildings and you see this sea in front of you. But it's a Friday night and people should be on the street or should be like doing something. यहाँ जो like stalls हैं, food stalls, वहाँ पे भी ज़्यादा लोग नहीं हैं. So I am just wondering where are they. Hello from another day. So we are at Batu Ferringhi beach, जो कि north side of the island पे है. And हम यहाँ पे कल आने वाले थे sunset देखने के लिए, but due to rain हम यहाँ पे नहीं आए. And we went back to our hotels to take some rest because we were not actually well. हम लोग आज सुबह आ गए just to experience the north side of the island as well. See water activities and people taking sun baths, and that's it about the beach. Zyada touristy, like the whole Penang is not really touristy. It's just that people come here and just want to chill and slow down kind of a thing, which we also did because our health was not fine. It is a pretty beach. We are here around 11-12, so sun is on the top, but it is still nice. So it is time to get out of the beach now. We had really less time in hand and we are going to go to the next destination, which is going to be our last destination here. And I'm quite excited about that because I feel better today than I was yesterday. And it is time to say goodbye to this beautiful beach and the mountains. And not actually mountains, only the beach, because that is the last thing here. Last time on the beach in another country for this vacation at least. Yeah. We took a ferry from GeorgeTown to Penang Central because here we will be catching our bus to the next destination. So getting back to why we can call it a multicultural island. तो जब आप पिनांग के जॉर्ज टाउन एरिया में आओगे, जो कि एक्चुअली पिनांग का कैपिटल है एंड ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो आपको बहुत सारी स्ट्रीट्स दिखेगी एंड ऑल दीज स्ट्रीट्स आर एक्चुअली रिलीजियस कम्युनिटीज़ इंक्लूडिंग बुद्धिज़्म, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड अदर्स. तो जहाँ मेरा स्टे था दैट वाज लिटिल इंडिया एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को वहाँ पे रह के लगा ही नहीं कि मैं मलेशिया में हूँ. मेरे को ऐसा लगा मैं एकदम इंडिया में ही हूँ. रीज़न बताती हूँ, एक मिनट. तो जो स्ट्रीट्स हैं, इस साइड आपको लिटिल इंडिया दिख जाएगा, एक स्ट्रीट छोड़ के आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी दिख जाएगी, कुछ स्ट्रीट्स छोड़ के आपको अर्मेनियन स्ट्रीट मिल जाएगी जो कि एक्चुअली फेमस है फूड एंड आर्ट के लिए, एंड बहुत कुछ आपको वहाँ पे चाइनीज़ में भी दिखेगा. एंड इन कम्युनिटीज़ के बारे में मैंने कुआलालंपुर वाले व्लॉग में भी बताया था, बट वहाँ पे सब कुछ दूर दूर था. बट हियर इन जॉर्ज टाउन सब कुछ पास पास है क्योंकि एक छोटी सी जगह है, तो सब कुछ ऐसे एक एक स्ट्रीट छोड़ के ही है. एंड और भी स्ट्रीट्स है जो आप अपने आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर यू कैन साइन अप फॉर अ वॉकिंग टूर टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री इन डिटेल. तो चलो अब वापस चलते हैं कि मेरे को बिल्कुल इंडिया क्यों लगा. तो देखो, अब लोग आए हैं, ये तो नहीं है सिर्फ वहाँ पे काम करने गए हैं, जॉब पे जाते हैं वापस आ जाते हैं. एक पूरी कम्युनिटी फॉर्म हुई है इंडियंस की. तो वहाँ पे ऑफ कोर्स फूड आएगा, वहाँ पे सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होंगे, एंड ऑल्सो वहाँ पे इंडियन टेम्पल्स होंगे, शॉपिंग के लिए जगहें होंगी जहाँ पे साड़ी मिलेगी, बिंदी, बैंगल्स एक्सेट्रा. तो ये सब कुछ वहाँ पे था, तो मेरे को लगा ही नहीं कि मैं इंडिया के बाहर हूँ कहीं पे. एंड सिंस मल्टी कल्चरल प्लेस है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ इंडियन का ही सेलिब्रेट होता है, सबका सेलिब्रेट होता है. दे सेलिब्रेट दिवाली से लेकर चाइनीज़ न्यू ईयर तक एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, सारे फेस्टिवल्स. तो वहाँ पे आपको मले, इंडियंस एंड चाइनीज़ तो बहुत दिखेंगे, एंड उसके अलावा भी लोग दिखेंगे. एंड आपको ब्रिटिश कॉलोनियल बिल्डिंग्स भी बहुत दिखेंगी वहाँ पे, क्योंकि पूरा ही 19th सेंचुरी से आई थिंक बना हुआ है सब कुछ. एंड अगर आप फूडी हैं तो वो आपके लिए एक पैराडाइज हो सकता है. अगर आप सब कुछ खाते हैं तो, अगर आप सिर्फ चिकन खाते हैं तो नॉट सो मच, क्योंकि मैं सिर्फ चिकन खाती हूँ एंड मेरे को तो बहुत ही अपने टाइप का खाना नहीं मिला. मैं इंडियन ही खा रही थी एंड उससे ज़्यादा मेरे को कुछ मिल नहीं रहा था, बिकॉज वहाँ पे चाइनीज़ बहुत ज़्यादा है. तो चाइनीज़ में ना बहुत टाइप का खाना होता है जो हम इंडिया में देखते हैं
वैसा कुछ नहीं मिलेगा आपको अगर आप उस इमेज से जा रहे हैं कि वैसा चाइनीज़ मिलेगा। तो एक दिन मेरे को मोमोज़ की क्रेविंग हुई, तो हम निकल पड़े डिमसम्स ढूँढने। एंड आपको डिमसम्स में चिकन तो कहीं पे मिलेगा ही नहीं। सारे मेन्यू ढूँढ लिए, एक एक रेस्टोरेंट मिला था एंड वहाँ पे पहुँच के भी इट वाज़ लाइक अब हम चिकन नहीं बेचते हैं, वी हैव ओनली पोर्क या बीफ। तो पोर्क या बीफ उनका स्टैंडर्ड खाना है। तो प्लीज़ अगर आप खाते हैं तो ही जाना, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट अ पैराडाइज़ फॉर यू। So keep that in mind. So if I have to sum up Penang in 4 words, then it would be food, history, culture and observation. एंड इतना देख लिया है मेरा व्लॉग, तो 30 सेकेंड्स और दे दो, मेरी दुख भरी दास्तां सुनते जाओ। So कल जब हम enter करे bus stop, then we saw that 30 minutes ago last bus चली गई थी. So we reached at 3 p.m. and 2:30 was the last bus. And we thought हम इपोहो चलते हैं, वहाँ से हमें शायद बस मिल जाए, पर इपोहो आके भी हमें कोई बस नहीं मिली. And यहाँ पे we were getting the taxi for 5,000, 6,000 rupees. So we thought like it's not really worth it to go to like spend that much amount to go to Cameron Islands. So we skipped that, but I really wanted to go to Cameron Islands because वहाँ पे tea gardens है and all that. So it was basically get near the nature kind of a thing. So अभी वो is a city town kind of a thing. तो हम यहीं पे रुके हैं. Now we are going to head back to Kuala Lumpur and हमारी flight है रात को. So that's about it from Malaysia. I am quite disappointed with the ending of Malaysia because Cameron Islands नहीं जा पाए, but it is what it is. I'll see you next time from another place somewhere in India, maybe. Bye. Do like, share, and subscribe.